हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पेंसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड कमिंग बैक टू माय क्लास। इन माय प्रीवियस क्लास मैंने कंप्लीट करवाया था सिंपल पास्ट टेंस which was very simple to understand, and I gave you the question. I proposed you a question that please find out what is a progressive tense. What is a progressive tense? Progressive tense क्या होता है? तो आज मैं बताने वाला हूं what is a progressive tense. Please do watch the video very carefully. So, progressive tense. What do you mean by progressive tense? Now, हिंदी में अगर बोलूंगा तो आप लोगों ने किया होगा, अपना बच्चों को करवाया होगा द पर्यायवाचक शब्द और इंग्लिश सिनोनिम्स. सो कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा पार्ट होता है या दूसरा वे में बोला जाता है प्रोग्रेसिव टेंस. सो ईदर वी कैन से पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जहां जहां कंटिन्यूअस दिखाने का है, इफ यू रिमूव द वर्ड कंटिन्यूअस वी कैन पुट प्रोग्रेसिव, because the meaning of the word progressive it basically means that it is continuing on for a period of time. वो continue हुआ था. So what I'm going to show you today is the progressive tense for simple past tense. For topic today, what we are going to discuss is past progressive tense, और in simple words अगर मैं बोलूंगा past continuous tense. तो चले करते हैं. Let's move on with the class of simple past tense. Part 2 is known as past continuous tense or past progressive tense. It may go on to present tense even. मैंने present continuous tense करवाया है. एग्जाम में अगर बच्चा को आपका जानबूझ के डिफिकल्ट दे दिया, पूछ लिया गया convert the sentence into present progressive tense या past progressive tense. So please tell your child that भैया देखो बाबू, बात सिंपल सा है. It's very simple. The word progressive means continuous. तो प्रोग्रेसिव लिखा हो तो ट्रीटमेंट जो उसका होगा वो वैसे ही रहेगा, एंड इफ इट इज कंटिन्यूअस आल्सो तो वैसे ही होगा. नाउ मेनी ऑफ माय व्यूअर्स आर टेलिंग मी टू पुट एन एक्सरसाइज. श्योरली आई पुट एन एक्सरसाइज अपॉन टेंस. एक नहीं, दो नहीं, जितना हो सकेगा उतना एक्सरसाइज करवाऊंगा. मगर फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस आई एम टॉकिंग अबाउट, वी हैव टू नो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. ओके, ईच टेंस हैज 4 डिफरेंट पार्ट्स. अब ऐसा हो सकता है सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, ओके, उसको बोल दिया गया है टू कन्वर्ट इनटू अ फ्यूचर टेंस और अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो व्हाट आई एम वेटिंग इज फॉर, आई एम वेटिंग टू कंप्लीट द होल पार्ट एंड देन मूविंग ऑन विद द एक्सरसाइज, सो दैट बच्चे लोग जो कराएंगे, जो देखेंगे वीडियो को, दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट केयरफुली. हम लोग रिविजन करके भी आएंगे. तो प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल. मैं सारा पार्ट कंप्लीट करवा लूंगा. श्योरली आई लीव अ exercise. Don't worry about that. Coming back to this topic, past progressive tense. So directly मैं आता हूं आपका formation में. Formation बताऊंगा. I'll let you all know the formation. Thereafter with the formation, I'll give you an example and then I'll show you what do you mean by past progressive tense or past continuous tense. The formation, I'm telling you, it is the basic formation. हमेशा क्लास 3 चालू करता हूं तो क्लास 3 में बताता हूं दैट अ सब्जेक्ट हैज टू बी देयर. ठीक है, प्लस वी हैव द हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, प्लस नाउ इन दिस टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आर एक्शन शुड एंड विद ing. सो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा सिंपली was या were. ठीक है, बट एक्शन शुड ऑलवेज एंड विद ing, वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. जब भी मैं कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव का बात कर रहा हूं तो एक्शन शुड एंड विद ing. ठीक है,
and plus the object plus whatever you want to add on वो आप add कर सकते हैं, it depends upon your vocabulary skills, but the basic formation is this, that यही होता है. Relating to present continuous tense मैं बात करूंगा, subject का subject ही रहेगा, helping verb में से बदलाव आ जाता है. इसमें we have was and were, and in the present continuous tense we had is am, are. Clear? No problem? ठीक है. Basically there is no rocket science in this. Science मत दुखाइए, just concept का बात है. The concept में ध्यान दीजिएगा, you get to know everything. Okay, so now today's first example. Okay, I was eating dinner. I was eating dinner. So आपके बच्चे लोगों को ये चैप्टर से फर्स्ट पार्ट क्या पूछा जा सकता है? A sentence will be given. Your child has to figure out or find out which type of tense is it. दो तरीका है फाइंड आउट करने का. फर्स्ट तरीका, ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू द फॉर्मेशन. अगर फॉर्मेशन आपको पता रहेगा, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मेशन, it's a bread and butter thing to solve and to get the correct answer. Now, I was eating dinner. Subject is I out here. ठीक है? Now, helping verb. The first way to find out which tense does a sentence belong to is by looking at the helping verb. Was. Now, was तो पहला बात है कि अच्छा was कौन कैटेगरी में फॉल करता है? Is it present tense, past tense or future tense? It belongs to a past tense category. So it is hence a past tense sentence. आधा पढ़ा हूं. I have only read till here. मैंने यहां तक पढ़ा and I got to know that it is a past tense. यहां तक क्लियर है? Now, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गया. Now, eating, action जिसमें ing लगता हो, that is a part of continuous tense or a progressive tense. So action हो गया आपका eating, eat plus ing हो गया, बन गया आपका eating. That means it is a past progressive tense. पास्ट पता चल गया. वॉज से प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस है कि नहीं, वी गेट टू नो बाय द वर्ड, बाय द एक्शन ईटिंग. Because any action that will end with ing, it will be a continuous tense. But whether it is a present continuous, past continuous or future continuous, we have to know by its helping verb or the auxiliary verb. ठीक है ना? ये देख के आपको पता चल जाएगा. तो भैया फर्स्ट पार्ट से पता चल गया past tense है, and second part of sentence से पता चल गया that it is a progressive tense और continuous tense. ठीक है? और continuous tense. ठीक है? I hope so this first part is clear. Now, with the help of a diagram, I'll explain the meaning of the word past progressive tense. Please copy this. I'll keep this sentence out here and I'll make a diagram above that. हाँ. Okay. Now, again I'll make a timeline. I like timeline, past, present, future. I love that. Okay, so past का timeline ये हो गया, present का timeline ये हो गया, and future का timeline ये हो गया. So we have three timeline: past, present, future. Very nice, very good. Now, I was eating dinner. So show, what does a past progressive tense or a past continuous tense show? क्या करता है? It shows an action which has started in the past. It shows an action which has started in the past. वो क्या action है तुम्हारा? The action is eating. वो past में चालू हुआ. It continued for a while in the past and then it ended. It started in the past, थोड़ा दूर तक गया, it went for a while, it continued for a while, and then it ended. So भैया खाना चालू किया अभी आप प्रेजेंट का टाइम is 5:30 PM.
ठीक है. So one of my friend, he started eating at around 2 p.m. ठीक है, 2 p.m. वो start किया, and then in the past only within 20 minutes he completed his dinner. So because it is dinner, so I'll keep it. The timing will change. पकड़ लेते हैं 8:30 p.m. and this becomes 8:40 p.m. and this becomes to 9:30. Sorry, इतना मिस्टेक हो गया. So if I'm eating my dinner, present में 9 बज रहा है. So 8:30 my friend started eating his dinner and वो 8:40 में complete कर दिया. तो an action which started in the past, it continued for a while in the past and then it got completed. ठीक है, past में चालू हुआ, past में continue हुआ for a while and then it finished. 8:30 वो start किया, 8:40 वो खत्म किया and present में भी बज रहा है 9:30. ठीक है. Now moving on to my second example. इसको ऐसे ही रखता हूं, only I remove the thing ताकि एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं. ओके. Rohini was watching television. Rohini was watching television. So now I'll create a scene. एक छोटा शॉर्ट स्टोरी बता देता हूं. Though not an English literature class, but तो स्टोरी तो बनता है. Rohini was watching television. अब देखो क्या होता है. That Rohini is the subject out here first. Then we have was, that is the helping verb, and watching. So with the help of these two words in the sentence, first of all we can get to know it is in past progressive tense or past continuous tense. Next part, इस situation कैसे carry होगा. Rohini was watching television. तो क्या वो एक scene पकड़ते हैं. Okay. One of her friend, मान मैं नाम करता हूँ वीरू. I called her up, okay ना, at around 10 p.m. At around 10 p.m. I called her up, but she didn't pick up the call. ठीक है ना. I called her but 10 p.m. 10 बजे मैंने कॉल लगाया, तो पास क्या हो गया. 10 p.m. मैंने क्या किया, कॉल लगाया. I had some work, I had to get some notes. मैंने कॉल लगाया, so उसने रिस्पॉन्ड नहीं दिया. So अब क्या होता है, I called up her mom. मैंने 10:05 को मैंने तो मम्मी का कॉल लगाया. Her mom picked up the call and she told, I asked her first that auntie, where is Rohini? Rohini किधर है? I am trying to call her, she's not receiving my call. So her mom told me maybe when I called her up in the past, Rohini was watching television. तो मैंने जब कॉल लगाया था around 10 p.m. at that time she was doing a particular work. What was she doing? She was watching a television. Rohini was watching television. तो मैंने कॉल लगाया, वो क्या कर रही थी. Rohini was watching television. So simply past continuous tense क्या denote करता है, an action which started in the past and it completes in the past after a while. Then and then खत्म नहीं होता, it completes after a while. Now if I just want to say a question, I give you a question, okay? Just like a teacher of the school, they give question. Children, now one question, and now children are like, ja baap re baap, I don't know the answer. But what if I give you a question which I tell you that please convert this sentence into a present continuous tense. Okay? Convert into present progressive tense. This time I am removing it because it's of no use right now. So your son or daughter has got a question, a sir has proposed a question that convert this sentence into a present continuous tense because past continuous related है, तो I'm converting it to a present continuous tense. So क्या होता है, subject will remain the same, Rohini. Now it says for इसको तोड़ दो,
break this into two parts, present and progressive. तो प्रेजेंट में क्या है? was है, past में was है. This thing is in past. So you will tell your child to see what is the helping verb already given in the sentence. Sentence में क्या verb दिया हुआ है? It is was. Now present में क्या हो जाएगा? So ask your child, tell me the helping verb of the present tense. So is, am, are, ये तीनों होता है. ठीक है. नाउ आस्क योर चाइल्ड, अगर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होता है तो विच हेल्पिंग वर्ड विल कम आउट हियर. तो योर चाइल्ड शुड से दैट हेल्पिंग वर्ब जो आएगा मम्मी या पापा इज आएगा. तो यू आस्क योर चाइल्ड अगेन बिकॉज गेस वर्क विल गो ऑन फॉर एवर. आस्क द रीजन फॉर इट. सो आपने पूछा इज क्यों लगता है बेटा. बेटा बोलता है पापा पता नहीं. अरे तेरा पता नहीं, कैसे नहीं पता? Tell him or her to think. Ask him or her, subject कितना है? How many subjects are there? One. So for one, we use always is in the present tense. Hence, we are using is. Rohini is. Now progressive. Progressive चाहे वो present tense में हो और it is in past tense. That word will remain the same. The action will remain the same. Hence, we'll copy the action. So यहाँ पर आता है is watching. And the object will remain the same. Television. So in the present progressive tense, this thing will change only. Was will become is. This is the only change which we'll find if I say if, a perfect tense में अलग होगा, perfect continuous में अलग होगा. That I'll go on when I'll be doing the exercise. Because I'm talking about progressive, क्योंकि मैं present progressive करवा चुका हूँ. That is why I'm talking about it. So Rohini is watching television will be the correct answer to this sentence if we are converting it into a present progressive tense. So guys, I end my class over here and I hope so you have understood it very well. If there is any doubt, please do let me know in the comment section. And if you haven't seen my video on present progressive tense, I'll leave the link down in the description box. Please do watch it. बड़ा मजा आएगा. But the exercises and all I'll be doing आराम से धीरे धीरे जाते हैं तब ना मजा आएगा. फर्स्ट लर्न द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल, देन आई विल मूव ऑन विद द एक्सरसाइजेस. दैट विल बी द एंड ऑफ द सीरीज ऑफ द चैप्टर 10. चलो, आई एम लीविंग and I'll meet you all soon. Please do subscribe my channel. Please, please and please. And please do take care of yourselves. Bye bye and take care.